आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य पर बात करते हैं। हम सोर्स मटेरियल के इस विश्लेषण में सीधे एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ के गहराई में उतरने वाले हैं जो अपने भीतर एक बहुत बड़ा राज छुपाए हुए है। एक ऐसा राज जो हमेशा से हम एक साधारण से दिखने वाले भौगोलिक विवरण के पीछे असल में एक बेहद असाधारण और एडवांस्ड सैन्य संरचना छिपी हुई है। तो हमारे सामने सबसे पहला और चौंकाने वाला सवाल ये खड़ा होता है, क्या वेदों की ये पवित्र नदियां वास्तव में किसी प्राचीन सैन्य अग्रिम दल यानी एक वैनगार्ड? Strict rule. Every noun is derived from a specific verb root. A name is a functional definition. Take the word nadi, typically translated as river. Its linguistic root actually refers to something deliberately channeled, constructed, or guided, not a passive force of nature. Apply these same names to a military organizational chart, and they map directly to functional branches. Ganga, yamuna, and saraswati represent technical metaphors for the functional divisions of a sena, a structured army. Tracing these verb roots reveals the logistical science behind the ancient march. This lens reveals not just where these forces moved, but how they were systematically sustained. का ब्लूप्रिंट है? जरा सोचिए। शास्त्रीय साहित्य को लेकर हमारी जो एक बुनियादी समझ बनी हुई है, ये सवाल उसे पूरी तरह से हिला। सरस्वती का जिक्र करते हैं तो वे महज जलधाराओं की स्तुति कर के अनुसार नदी या सिंधु शब्द का इस्तेमाल एक बहुत ही विशिष्ट और रूपक अर्थ में हुआ है, यानी एक रास्ता खोजने वाला अग्रिम दल, एक हाईली स्ट्रक्चर्ड मिलिट्री फोर्स। अग्रिम दल की संरचना को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इस प्राचीन सेना की अलग-अलग शाखाएं कैसे काम करती थीं। अगर हम इन शाखाओं को देखें तो हर नदी वास्तव में सशस्त्र बलों के भीतर एक बेहद स्पेशलाइज्ड और काफी मॉडर्न लगने वाले डिपार्टमेंट को दर्शाती है। उदाहरण के लिए यमुना, इसका अर्थ उस ब्रांच से है जो सेना में कठोर अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखती है। सरस्वती कोई बहता हुआ पानी नहीं है, बल्कि यह सेना की पूरी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को संभालती है। और सुतुद्री वो विभाग है जो शस्त्रागार, वेपन्स और तीव्र गतिशीलता की जिम्मेदारी लेता है। साफ है कि ये कोई साधारण कबीले की फौज नहीं थी, बल्कि एक बेहद प्रोफेशनल सैन्य बल का ढांचा था। आइए इनमें से सरस्वती शाखा पर जरा करीब से नजर डालते हैं। विश्लेषण इस बात पर बहुत जोर देता है कि सरस्वती असल में सेना की एक क्रिटिकल सप्लाई चेन थी। सोचिए, जब एक सेना युद्ध के लिए बेहद दुर्गम पहाड़ों या भयानक घने जंगलों से गुजर रही होती है, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सैनिकों तक राशन, पानी और हथियार पहुंचाना। सरस्वती उसी जीवन रेखा का नाम था जिसका काम ये पक्का करना था कि सेना का ये वैनगार्ड कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, सर्वाइव करें और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पूरी मिलिट्री संरचना में गंगा क्या है? स्रोत साफ करता है कि गंगा यहाँ कोई फिजिकल लोकेशन या कोई भौगोलिक नदी नहीं है, बल्कि गंगा वह सर्वोच्च नैतिक उद्देश्य है जिसे हासिल करने के लिए ये पूरी की पूरी सेना लड़ रही है। गंगा इस युद्ध का अंतिम गंतव्य है। पूर्ण न्याय। Have read these verses as a literal map, pinning the ancient names directly onto the physical waterways of northern India. But reading it as a map creates immediate friction. The text explicitly describes these bodies of water wearing heavy bronze armor, riding well-built chariots, and commanding fine horses. To make the geography theory work, scholars have had to write off these highly specific, technical verses as nothing more than poetic imagery. Any advancing army requires a forward operations branch. The word ganga fills this note. Etymologically, it defines the act of moving forcefully toward an ultimate objective. In a tactical environment, the Ganga division clears physical obstacles, bypasses geographical choke points, and maintains absolute focus on breaking the enemy line. A vanguard operating on pure kinetic aggression will eventually destroy itself if it lacks internal control. This necessitates a parallel branch on the chart, internal regulation, represented by the name yamuna. The root of yamuna defines the framework of rules. This division is tasked with maintaining character, enforcing troop discipline, and preventing internal decay. The Vedic tacticians paired these two forces to formalize a fundamental military balance. The outward, kinetic strike of the Ganga is strictly governed by the inward, organizational discipline of the yamuna. A forward force cannot sustain combat operations for long without a permanent lifeline. This central branch dropping down into the chart is logistics and supply, populated by Saraswati. While later texts revere Saraswati as a river of knowledge, here it serves a strictly operational function. The hymn outlines this division's responsibility to guarantee the continuous delivery of water,
rations, and essential survival materials. This supply chain had to penetrate severe terrain, moving heavy cargo through treacherous mountain gorges and dense forests to keep the vanguard alive. Logistics also requires a dedicated sub-branch for combat hardware. This node is occupied by Satudri, traditionally mapped to the Sutlej River. The text aligns this branch with the maintenance of mechanical tools, heavy weaponry, and armored transport. This structure confirms an ancient understanding and a modern military reality. Engagements are decided by the grinding, invisible machinery of the supply chain. All of these operational branches feed up to the top of the hierarchy, the Supreme Command. To define the requirements for this position, the text employs the iconography of Vishnu. In the Vedic context, Vishnu represents the pervading or striding force, providing a mnemonic for the general's specific duties. The baseline requirement for command is a psychological duality. Urdhva, the capacity for constant upward growth, anchored by Dhruva, absolute grounded stability. Each attribute serves as a functional requirement for leadership. The winged Garuda mount represents forward-looking ambition and the drive to push the army's agenda into new territory. The Shenka, or white conch shell, represents the capacity for mass communication, the physical ability to project a single voice across vast, chaotic ranks. रचना से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस व्यक्ति की जो इस बल का नेतृत्व करता है, यानी सेनापति, और उसके रणनीतिक गुण। ये हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। अगर हम भगवान विष्णु की मूर्ति के उन प्रसिद्ध प्रतीकों को देखें, तो स्रोत के अनुसार वे असल में बहुत ही प्रैक्टिकल और रणनीतिक सैन्य गुणों में बदल जाते हैं, जैसे शंख। इसका मतलब है व्यापक संचार, यानी मास कम्युनिकेशन की क्षमता, ताकि सेनापति की आवाज आखिरी सैनिक तक पहुंचे। चक्र का अर्थ है तेज मोबिलिटी और बेहतरीन वाहन। गदा शत्रुओं को कुचलने और दंडित करने की वो शक्ति है जो सेना को सुरक्षित रखती है। और अंत में पद्म यानी कमल, ये दर्शाता है कि सेनापति का संसाधनों, संपत्ति और लॉजिस्टिक्स पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। और सिर्फ हथियार ही नहीं, नेतृत्व की साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को समझना भी उतना ही जरूरी है। स्रोत स्पष्ट करता है कि एक सफल कमांडर को दो बिल्कुल अलग प्रवृत्तियों का बैलेंस बनाना होता है। एक तरफ गरुड़ है जो असीम महत्वाकांक्षा, तेज उड़ान और हर हाल में जीत की प्रेरणा का प्रतीक है। कमांडर को एग्रेसिव होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सर्प यानी सांप है जो शक्ति, धन और संसाधनों को बहुत ही सावधानी और धैर्य के साथ इकट्ठा करने का प्रतीक है। एक सेनापति को गरुड़ की तरह महत्वाकांक्षी भी होना है और सर्प की तरह रणनीतिक रूप से धैर्यवान भी। अब हम इस सेना के उस फिलॉसफिकल कोर पर आते हैं जो इसे सही मायनों में एक दिशा देता है, यानी इसके नैतिक दिशा निर्देश और कर्तव्य का दर्शन। इस पूरे विश्लेषण की सबसे गहरी और महत्वपूर्ण बात यहीं पर है। ग्रंथ स्वार्थ से भरी हिंसा और निस्वार्थ कर्तव्य के बीच एक बहुत ही लकीर खींचता है। अगर कोई भी The chakra, or wheel, describes the requirement for vehicular mobility and the rapid deployment of bullet carts and chariots. The gada, the heavy mace, is the general's mandate to project hard power and enforce the strict discipline required for the army to function as a unit. Finally, the padma, the lotus, signifies the control of economic resources. Without financial stability, a standing army cannot maintain its logistics or its equipment. These items are not magical decorations, but a codified checklist of the practical competencies required for high-level strategic command. With all nodes populated, the functional system of the river Him comes into full focus. However, the manual places a strict philosophical limit on this machine. It is explicitly authorized only for national defense and the protection of justice. The verses carry a severe warning. Deploying this massive force for unprovoked aggression or personal enrichment is classified as a crime against the state. Etymological analysis reveals a level of logistical detail that literal geography cannot account for. Flowing, interconnected bodies of water provided the perfect natural metaphor to encode the complex, branching supply lines of an ancient military. The Sapta Sindhu Sukta stands as a meticulously designed blueprint for command, control, and survival on the ancient battlefield.